बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेडागोजी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो कि एफपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासरूम मैनेजमेंट के एमसीक्यूज़। ओके, तो आज के इस लेक्चर में जो है हमने क्लासरूम मैनेजमेंट के एमसीक्यूज़ डिस्कस करने हैं। सो ये लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर जो लोग पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एफपीएससी किसी भी लेक्चर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो आई होप कि इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। काइंडली वीडियो को मिस ना कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। और काइंडली जो लोग चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इसके साथ ही मैंने जो टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ और टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी से रिलेटेड जो मैंने लेक्चर्स वीडियोस अपलोड की हुई हैं, वो उनका लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, तो आप वो वीडियोस भी देख लीजिएगा, पूरा चैनल की प्लेलिस्ट भी देख लीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट वन है हमारे पास, द मेन पर्पस ऑफ द सुपरविजन ऑफ टीचिंग शुड बी द। ये सुपरविजन मेन पर्पस जो होता है टीचिंग की सुपरविजन का, तो हमारा वो क्या होना चाहिए, दैट इज़ एडवांसमेंट ऑफ पीपल वेलफेयर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, सुपरविजन शुड बी प्राइमरीली। सुपरविजन को प्राइमरीली क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव। द बेसिक पर्पस ऑफ सुपरविजन इज़ टू हेल्प। बेसिक पर्पस जो है सुपरविजन का वो क्या है, हेल्प करना, टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली। सी ऑप्शन हमारे पास राइट है। द एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द। जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स होते हैं वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसे, दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हेड मास्टर। द क्रिटिसिज्म मोस्ट फ्रीक्वेंटली लेवल्ड एट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ दैट। जो क्रिटिसिज्म जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली स्कूल लेवल पे होता है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो वो क्या होता है, दैट इज़ दे फेल टू प्रोवाइड लीडरशिप। The school headmaster are expected to put into operation the course of study. A supervisor is one who provides friendly help. Supervisor वो होता है जो हमेशा friendly help provide करता है. The effective supervision is indicated by, effective supervision जो होती है वो indicate होती है by helping teachers becoming more self-sufficient. The school policy should be determined by citizens and educators. Okay, the chief responsibility of the principal is यानी कि सबसे बड़ी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिंसिपल की वो क्या है, दैट इज़ टू प्रोवाइड लीडरशिप इन इंस्ट्रक्शनल प्लान। इंडिकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड इज़, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड का इंडिकेशन क्या है, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव, इक्वल राइट्स, पार्टिसिपेशन, कोऑपरेशन, ऑल ऑफ द अबव। ओके, द हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गोज बैक टू 5000 BC. ओके, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स टू लुक आफ्टर। The function of educational administration and management is, इसका जो basically main function है that is instructional tasks and non-instructional tasks, both A and B include होता है. Provision of good educational environment in is, provision of good educational environment is instructional tasks. Okay, next है हमारे पास, arrangement of physical resources is नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क। फिजिकल रिसोर्सेज की जो अरेंजमेंट है वो नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क में आती है। द मेन टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर, मेन टाइप्स जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन की वो 3 हैं। विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें से एडमिनिस्ट्रेशन की टाइप जो है वो कौन सी नहीं है। अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी की टाइप है, डेमोक्रेटिक भी, लेसेस फेयर भी, बट इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की टाइप नहीं है। विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज़ शेयरिंग। ओके, रूडनेस अथॉरिटेटिव में आता है, सप्रेशन द सबऑर्डिनेट्स आता है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आता है, बट शेयरिंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन, अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका जो एटीट्यूड है वो बेस्ड होता है डिक्टेटरशिप पर। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन, डेमोक्रेटिक जो है वो बेस्ड करती है म्यूचुअल शेयरिंग पर। लेसेस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन, लेसेस फेयर बेस्ड करती है नॉन इंटरफेरेंस पे। ओके, इसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट इंटरफेरेंस नहीं होती। बॉस इज़ राइट इज़ द फीचर ऑफ, बॉस जो है हमेशा राइट जो है वो अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। रेस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन इज़ द फीचर ऑफ, रेस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन जो है वो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है कि हर बंदे का जो ओपिनियन है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी रिस्पेक्ट की जाए, उसे इनकरेज किया जाए। Sense of responsibility is not cured in
that is laissez-faire administration. सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नहीं है इज़ नॉट केयर्ड, वो उसमें उसका ख्याल नहीं रखा जाता. लिटरल मीनिंग ऑफ सुपरविजन इज दैट इज सुपीरियर नॉलेज एंड पावर. सुपरविजन इज नॉट टू कंट्रोल द टीचर बट टू वर्क कोऑपरेटिवली इज द हॉय एंड इज जस्ट सेइंग ऑफ. ये किसकी जो है कहावत है, दैट इज हॉय एंड फोर्सिथ. इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सुपरविजन इज यूजुअली कैरिड आउट बाय प्रिंसिपल है. असेसमेंट ऑफ हाउ वेल अ स्कूल इज परफॉर्मिंग इज, ये जो है ये इंस्पेक्शन में आता है. अकॉर्डिंग टू फ्योल स्टूडेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर, दैट इज 5. ओके, राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है 5. अकॉर्डिंग टू गोलिक एंड उर्विक एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर, इन दोनों के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो 7 है हमारे पास. इन पोस्ट कॉर्प को स्टैंड्स फॉर, दैट इज को स्टैंड फॉर coordinating. Okay, to make arrangements is the part of, that is the part of organizing. Execution of plans and decisions is the part of, that is the part of commanding. To bring harmony among all the elements of programs is, that is coordinating. School budget includes, school budget जो है include करता है development expenditure and non development expenditure, both A and B. BM stands for budget manual. Okay, नेक्स्ट हमारे पास है 36 MCQ. नॉन डेवलपमेंट बजट इंक्लूड्स, नॉन डेवलपमेंट बजट जो है वो इंक्लूड होता है ऑल ऑफ द अबव. सैलरीज, रनिंग एक्सपेंडिचर्स, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग. स्टूडेंट्स ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें हम 100 अबव MCQs आज डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चरशिप के एग्जाम्स के लिए. New libraries, laboratories, etc. are constructed under development budget. Leadership is the ability. Leadership is the ability to influence, to motivate, to achieve organizational goals. All of the above. तो ये तमाम ही इसमें include होते हैं. Staff development means training staff. Selecting one course of action among various alternatives is, that is decision making. Who is called father of scientific management theory, that is Frederick Taylor. Who is the father of operational management theory, that is Henry Fayol. All government grants and expenditures are maintained in, that is cash register. In case of GPF advance, the number of installments for refunding is, that is 24. Developing alternatives is a step of, that is planning. Okay, developing alternatives जो है वो planning का step है. How funds in a given period will be obtained and spent is, that is budget. Types of supervision encouraging variety, originality and independent experimentation is, that is creative. Okay, ये creative में include होता है. Who advocated bureaucratic theory? Bureaucratic theory को जो है किसने पेश किया था, that is Max Weber. Directing must be consistent with organizational policies, procedures, job descriptions, all of the above. तो हमारे पास right सारे ऑप्शन ही right है. In case of new recruitment, the problem period is, that is 3 years. The power delegated throughout an organization is, that is decentralization. The father of modern theory of management is, modern theory के of management के जो father है वो कौन है, that is Henry Fayol. The smallest interacting parts of a system are, that is component. Which pension is granted to civil servant who retires in the age of 60, that is superannuation. Okay, and next is all financial transaction of the school occurring from day to day is entered in, that is cash book. ये cash book में सब enter किया जाता है. The process of directing others towards the accomplishment of some objectives is, that is managing. Micro planning is done in, micro planning जो है वो done होती है middle and lower management में, क्योंकि micro का मतलब है small. The ACR cannot be initiated for the period of less than 3 months. The individual in the group given the task of directing and coordinating is, that is supervisor. A choice made between 2 or more alternatives is called, that is decision. The cash book is maintained by DDO. Okay, authoritarian model is more suitable for discipline. Teacher salaries and allowances collectively are written in, that is cash register. To motivate the other to achieve certain goals is, that is leading. A program of activities which is designed to attain educational ends is, that is curriculum.
सुपर रिटायरमेंट एज इन पाकिस्तान इज़, वो है हमारे पास 60 years. पेंशन इज़ गिवन इफ़ द रिटायरमेंट इज़ आफ्टर सर्विस ऑफ 25 years. ओके. पर्सन हु possesses qualities of leadership is a leader. क्या है जिसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ होंगी वो पर्सन क्या कहलाएगा, लीडर कहलाएगा. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड इवेल्यूएशन. द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्लानर आर, गुड प्लानर की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ही विल बी ऑप्टिमिस्टिक, मोटिवेटर, प्रोड्यूसर, ऑल ऑफ देम. तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स उस गुड प्लानर के अंदर मौजूद होती हैं. व्हाट डज ई एंड डी रूल्स मीन्स, ई एंड डी रूल्स का मतलब होता है एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स. ओके. एडीपी इज एन एब्रीविएशन ऑफ, एडीपी जो है वो किस चीज़ का एब्रीविएशन है, दैट इज एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम. The power is concentrated in the hands of one or few people in, that is centralization. What is central to administration? That is decision making. In posted R stands for, R जो है वो किस लिए stand होता है, that is stand for reporting. SNE is an abbreviation of, SNE जो है वो abbreviation है schedule of new entry का. The level of school administration can best be judged through, that is judged through learning outcomes. Okay. Acquittance role is used for, that is used for salary disbursement. Okay. The degree to which organizational resources contribute to productivity is, that is efficiency. All transactions should be entered in which register, that will be registered in cash. Okay. Coordinating, stimulating and directing the growth of teacher is the purpose of, that is the purpose of inspection. The concept of inspection was first introduced in, that was first introduced in England. Budgeting is an estimation of, that is an estimation of income and expenditure. ये इसमें हमारे पास है सी ऑप्शन. द ऑथोराइज्ड पर्सन ऑफ स्टाफ परफॉर्मेंस इज, ऑथोराइज्ड पर्सन जो होता है स्टाफ परफॉर्मेंस का वो कौन होता है, दैट विल बी हेड टीचर. PPSC MCQs solved sample paper or headmaster or deputy headmaster instrument used for measuring sample of behavior is, that is the sample of behavior is a test. Okay. Limited to quantitative description of pupils performance is, that is measurement. The purpose of evaluation is to make, that is to make judgment. Okay. The purpose of evaluation is to make judgment about educational quality. Okay. Educational quality के बारे में हम judgment करते हैं. Evaluation that monitors learning progress is, वो वाली evaluation जो कि learning progress को monitor करती है, that is called formative assessment, formative evaluation. Sorry. A formal and systematic procedure of getting information is, that is test. The process of obtaining numerical value is, यानी कि process of obtaining numerical value क्या है हमारे पास, that is called measurement. A sum of questions is, that is called a test. The first step in measurement is, first step जो है measurement का, that is decision of what to measure. The purpose of formative evaluation is, formative evaluation का जो purpose है वो क्या है, that is monitoring progress of students, monitoring progress of students. ये एजेंसी क्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं ख़ास तौर पे FPSC लेक्चर के लिए. ओके. टू असेस अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़, आपको पता है जो अचीवमेंट है यानी कि एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन होती है, दैट इज़ कॉल्ड समटिव असेसमेंट होती है. ओके. वास्ट ऑफ ऑल इन स्कोप, वास्ट ऑफ ऑल इन स्कोप जो है टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, एवेल्यूशन, तो इन सब में से एवेल्यूशन का स्कोप जो है वो वास्ट है. द लीस्ट इन स्कोप इज़, लीस्ट स्कोप जो है वो टेस्ट का है. ओके. ये टेस्टिंग यानी एवेल्यूशन सही है MCQ में सारे. परमानेंट डिफ़िकल्टीज़ इन लर्निंग आर इन्वेस्टिगेटेड इन, परमानेंट डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो लर्निंग में हम इन्वेस्टिगेट करते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट में. ब्रॉडर इन मीनिंग इज़, ब्रॉडर इन मीनिंग जो है वो एम्स होते हैं. प्रोसीजर यूज टू डिटरमिन पर्सन एबिलिटीज़ इज़, दैट इज़ मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट. 100 MCQs हमारे पूरे हुए. नेक्स्ट हम देखते हैं इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट द कंपैरिजन इज़ बिटवीन, नॉर्म रेफरेंस में कंपैरिजन जो होता है वो इंडिविजुअल्स के दरमियान होता है. इन विच क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्किंग विल बी मोर रिलायबल, तो क्वेश्चन मार्किंग जो है वो सबसे ज़्यादा रिलायबल किस चीज़ में होती है, दैट इज़ रिलायबल ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. फैसिलिटी वैल्यू ऑफ लेस दैन 0.20 मीन्स, फैसिलिटी वैल्यू जो है लेस दैन 0.20 मीन्स इसका मतलब होता है कि आइटम जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट है, आइटम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. ओके. ऑब्जेक्टिव टाइप question have advantage over essay type because such questions are easy to
mark. Okay, discrimination value of more than 0.4 means, इसका मतलब है that atom is acceptable. Test involving the construction of certain patterns are called performance tests. In multiple choice items, the stem of the items should be meaningful. Which appropriate verb will you use to make an objective behavioral, that is to construct? Objectives representing the purposes of instruction of a teacher are called instructional objectives. Okay, running description of active behavior of a student as observed by the teacher is that is anecdotal record. Okay, a test very popular with classroom teacher is that is multiple choices. Frequently used tools of summative evaluation are that is test. The most commonly used guessing correction formula to predict and control is that is S is equal to R dash W by N minus 1. Okay, next is the summative evaluation is certifying judgment because it will be at the end of the course. Okay, the difference between maximum and minimum values is that is range. The number of score lying in a class interval is that is frequencies. A multiple choice question is composed of question referred as that is stem. In a norm reference test, which item is best, that is item difficulty is near 50. ये MCQs जो है मैंने डिफरेंट साइट्स से लिए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. Which question has increasing objectivity of marking, that is multiple type questions? The most widely used format on standardized test in USA is that is multiple type questions. Okay, next is which questions are difficult to mark with reliability, that is unstructured essay. Projective techniques are used to measure that is personality. Tests meant for prediction on a certain criterion are called aptitude test. Coder Richardson method is used to estimate reliability. Okay, value that divides the data into two equal parts is that is median. The test measures what we intend to measure. This quality of the test is called validity. The length of a test is an important factor in obtaining a representative, that is called sample. Median of 1,24523 is that is 3.5. The test made to compare the performance of student with the other students is called that is norm reference test. The summative evaluation is used at the end of the program. The appearance of norm ठीक है. The alternative name of the table of specification is that is test blueprint. Table of specification helps in that is test development. The supply type test item is that is completion items. Alternative response item जो है that is all above. True false items भी include होते हैं, right wrong भी, correct incorrect भी. How many columns matching items have, that is 2. The item in the column for which a match is sought is that is premise. Identifying relationship between two things is demonstrated by matching items. Okay, 139 MCQs है हमारे पास. Next, the statement of problem in MCQs is that is stem. The correct option in MCQ is that is answer. The incorrect option in MCQs are that is destructor. Okay, the most widely applicable test item is that is MCQ items. The type of essay item in which contents are limited is that is restricted response questions. The ability to select, organize, integrate, and evaluate ideas is demonstrated by extended response questions. The analysis of items is necessary in that is standardized test. Which one is not the type of test by purpose, that is essay type test. The type of the test by method is यानी टेस्ट की वो टाइप जो बाय मेथड होती है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट. स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट्स इन. स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस होती है वो हम कंपेयर करते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में. स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क्स इन दैट इज क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट. ओके,
Test that measure learning outcome of students is that is achievement test. The test designed to predict future performance is that is aptitude test. The founder of modern intelligence tests was founder जो था modern intelligence test का that was Alfred Binet. The formula to determine IQ was presented by ये जो formula था IQ determine करने का that was presented by Stern. IQ of a student having same physical and mental age will be that is 100. The IQ of a student having 12 years mental age and 10 years physical age will be that is 120. The quality of test that measures what it claims to measure that is validity. और अगर इसी तरह से सेम स्कोर वाला हो तो वो रिलायबिलिटी में जाएगा कि हर दफ़ा हम सेम रिजल्ट्स अचीव करें. द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ टेस्ट टू discriminate between high achievers and low achievers is that is differentiability. If the scoring of the test is not affected by any factor, quality of test is called that is called objectivity. The quality of test is to give same scores when administered at different occasions is that is reliability. If the sample of the question is that in the test is sufficiently large enough, the quality of test is that is adequacy. The quality of test showing ease of time, cost, administration and interpretation is called that is called usability. Next है हमारे पास facility index of an item determines that is ease or difficulty. High and low achievers are sorted out by sorted out by discrimination power. Test item is acceptable which its difficulty index or difficulty level ranges from 30 to 70%. Okay, next is test item is very easy when value of difficulty index or difficulty level is higher than 70%. Okay, test item is very difficult when value of facility index or difficulty level is लेस देन कि जब वो लेस होगा 30% के तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा और इजी कब होगा जब वो 70% से हायर होगा. ओके, discrimination power of an item is acceptable when its value ranges from 0.30 to 1. Test item discriminates 100% when its value for discrimination is that is 1. Test item cannot discriminate low achievers and high achievers when its value is lower than 0.30 to 1. Okay, I hope it's clear to all of you. आज की इस वीडियो में हमने 168-9 जो MCQs हैं वो किए हैं और ये लेक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है FPSC के लिए, PPSC के लिए, SPSC के लिए, KPSC के लिए और NTS वगैरह के लिए. काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.